think you should. Hello everyone, this is Chinmay from Makeado Clinic. Welcome back to our technical talk. Makeado Clinic always given you lots of technical knowledge. We have shared lots of points which are very much important in the repairing, in the DIY session. We are going to upload lots of detail, you know, information about the engine as well. So please stay connected and get updated. So today I'm going to show you how to check your brake fluid quality. Most of the time I have seen people, they don't change the brake fluid. Generally I have heard that those technicians or mechanics who has got half knowledge, they generally say nothing happens to the brake fluid, you should not change it very often. It is not like that, you have to change it. In my old videos also I have mentioned many times that you have to change brake fluid at least 4 times in a year, that is almost every after 3000 kilometers, because the degradation of the brake fluid. The brake fluid is fluid, not oil. So first of all, try to change the terminology because it is not based on oil, right? The brake fluid, particularly this one, can mix up with the water. That means what does that mean? It is hygroscopic. मतलब क्या है? हाइग्रोस्कोपिक यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो ब्रेक फ्लूइड है ये पानी में मिक्स बहुत इजीली हो जाता है। तो ये टेस्ट क्यों करना है मुझे? ब्रेक फ्लूइड बेसिकली क्या हो जाता है, जब आप जब राइड करते हैं, जब आप ड्राइव करते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एट द ब्रेकिंग पॉइंट, द हीट गेट्स जनरेटेड, वहां पे हीट जनरेट होता है, वो ट्रांसफर होता है या तो ड्रम सिलेंडर को, यानी कि जो नीचे अंदर आपका जो व्हील है उसके अंदर जो सिलेंडर्स रहते हैं वहां पे वो हीट ट्रांसफर होती है, या कैलिपर के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है टू द ब्रेक फ्लूइड। अब ब्रेक फ्लूइड को हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होने वाला है? According to you, I don't know. According to me and according to the company, according to the manufacturer as well, because they have made such kind of a fluid. Earlier it was brake oil, but they stopped using this brake oil. Now they started using this brake fluid. There are some categories in, I mean, the DOT, that is Department of Transportation, they have given the grades for particular this. So let's get back to the first for this point, the hygroscopic. इसमें पानी कहाँ से आता है, मुझे इसमें से पानी क्यों चेक करना है, मैं यहाँ पे पानी का क्या संबंध है? हाइग्रोस्कोपिक पानी में मिक्स होता है। अच्छा, जब नीचे हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने के बाद वो ब्रेक फ्लूइड के थ्रू इधर तक उसका हीट आ जाता है, द हीट कम्स टिल दिस पॉइंट बिकॉज द ब्रेक फ्लूइड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दैट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पर्टिकुलरली, इट स्टार्ट एट दैट बॉइलिंग, दैट पॉइंट। सो वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद कोई भी चीज आप समझो, कोई भी चीज जब गर्म होती है जो लिक्विड में, वो लिक्विड उसका स्टीम हो जाता है कभी। तो ये ब्रेक फ्लूइड में यहां से यहां तक, यानी कि ये पोर्शन से लेके ये पोर्शन तक एक्चुअली ब्रेक फ्लूइड नहीं रहता, यहाँ पे बूट रहता है। ये बूट में वहां पे एयर है, इतना आपका ब्रेक फ्लूइड है, इतना आपका एयर है। नाउ जब ब्रेक फ्लूइड हीट अप हो जाता है, व्हेन द ब्रेक फ्लूइड गेट्स हीट अप, द एयर वॉट एवर इज देयर इन दिस रिजर्वोयर गेट्स हीट अप। When we stop the vehicle, we keep the vehicle, like at night I'm parking my bike, I'm getting again in the morning, say for 6 hours I'm keeping the bike as it is in the parking. That means I'm cooling down the air. When I'm cooling down the air, it is becoming, the hot air is becoming steam, steam becomes water again because I'm cooling down. So the water basically which is now inside the caliper, this master cylinder, mix up with the brake fluid. Brake fluid again I'm telling, it's a hygroscopic, that means it can mix with the water. अब ये दो चीजें हो जाती है कि पानी इसमें मिक्स हो गया है। जब पानी मिक्स हो जाता है तो उसका और एक प्रॉब्लम तैयार करता है, ये है एलॉय। एलॉय का टेंडेंसी ये है कि पानी के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ जब भी इसका रिएक्शन हो जाता है, इसमें डिपोजिशन तैयार कर जाता है। तैयार होने के बाद ये डिपोजिशन, यानी जहां पे पिस्टन का जो एक्टिवेशन है वहां पे वो आना चालू हो जाता है और उधर मास्टर सिलेंडर आपका फेलियर होना चालू हो जाता है। दैट मीन्स ये जो चीजें है, ये जो डेब्रिज है, ये जो डिपोजिशन जो अंदर पैदा होता है, उसको आपको रोकना है। कैसे रोकना है? तो एवरी आफ्टर 3000 किलोमीटर यू शुड चेंज द ब्रेक फ्लूइड। नाउ if the steam is becoming water mix up with brake fluid again reacts on this alloy, because this is alloy material. Alloy has got tendency that it becomes in, it shows the byproduct or its own byproduct because of the weather, water and everything. It shows white deposition inside. When the white deposition, it happens when it occurs, the, I mean, when the
the debris is there inside, what happens basically? It clogs the ports which are given for the brake fluid. There are two ports inside, and then it gets stuck up in the this piston. There's a piston inside, there are some o-rings inside, so it gets stuck up, and because of that your master cylinder goes on toss. So don't wait to change your brake fluid. So every after 3000 kilometers basically you have to change the brake fluid. Every after 10,000 we can say you can change your brake pads, right? But whenever you're changing your last, after when that is your fourth, when you're changing your brake fluid, at that time you may need to change the brake pads as well. So in that case you have to remove the brake fluid first, you have to replace the brake pads second, and then again you have to put the brake fluid, because the quantity will get changed. Because whenever the brake pads get worn out, the fluid level gets, it keep on changing around. So don't top up also. So now I'm going to check, I'm going to show you how to check all those things. So first of all, so the brake fluid is hygroscopic, but it has got another one negative point. If you spill it on the color, the color get damaged. आपका अगर brake fluid color पे अगर गिरता है तो गाड़ी का कलर सब खराब हो जाएगा. सो ये अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको कवर करना जरूरी है. आई जनरली यूज रेक्सिन, व्हाट यू गेट इन द मार्केट. This is a Rexin which I am using. वाटर आई एम कीपिंग हैंडी, बिकॉज जस्ट इन केस अगर वो स्पिल होता है कहीं पे तो मैं उसको स्प्रे करके क्लियर कर लूंगा. आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड. We'll be requiring one small cloth, one Phillips head screwdriver, and the main tool. This tool is particularly made for testing the brake fluid. How does it work? I'm going to show you. Don't worry. ये जो टूल है ये ब्रेक फ्लूइड चेक करने के लिए बनाया हुआ है. रैंडमली कुछ लोग बोलते हैं ब्रेक फ्लूइड आपका अच्छा है, लेकिन क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है, आपने कैसे चेक किया हुआ है, उसका एक तरीका रहता है. आप कुछ भी अगर आप बात करेंगे किसी से भी और अगर आप हमें कन्विंस करने का ट्राई करेंगे तो दैट इज रॉन्ग. गो टेक्निकली. ये जो टूल है ये मुझे बताने वाला है कि ये पर्टिकुलर मास्टर सिलेंडर में वाटर लेवल जो कंटेंट है वो कितना लेवल तक है, शुड आई चेंज इट और नॉट, राइट. अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर तो आराम से हो गई है, 4 to 6000 किलोमीटर. आई डोंट नो बिकॉज द क्लाइंट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू माय प्लेस. सो आई एम गोइंग टू check the brake fluid. Now you are saying, you will say that one side you are saying that every after 3000 kilometer you should check the brake fluid. See what happens, it's a general term, right? It's a street use. When you are covering up 3000, I may cover up very harsh way, or I may be in the racing or something. If I am covering up or if I am applying the brake very frequently, then the brake fluid may get damaged before 3000 also. That is the reason I want to check, right? So I'm going to open up this master cylinder. I'm going to open both the Phillips head countersunk screws from the top. Better to use glasses. I don't want to get hurt. So I'm going to open up the master cylinder cap. This is the reservoir cap, right? Now let's keep it aside. Let's keep those things away from the color. Just check for any brake fluid if it is outside or something. Now in this case you can see one more thing. As I was talking about the deposition, here is the deposition. I'll just point out. Here is the deposition which happened because of the water, the mixture of brake fluid and water. It is acted absolutely on this master cylinder. As you can see, this is the debris which I was talking about. If this particular material goes inside the port, the master cylinder will go on toss. Then again you will have to change the material, this master cylinder. And in bigger bikes, the cost of material is very high. So maintaining is more better and easy than changing or replacing the master cylinder or any motorcycle spare part, right? So I'm going to just clean it up right now. I'll keep the cloth here only because it has got some debris. I'm going to check the brake fluid. This tool
has got total 5 points, 5 LEDs, as you can see over here. One is 0%, one is less than 1%, one is second, the third is less than 2%. Then the fourth is basically less, but it is not permissible because as you can see hazard switch over this symbol over here, and this is more than 4, right? Now which is the best one what I want? I'll be like in okay. This is the battery. 0% is basically battery, so it is just an indication that I have started a tool. So this I don't need to consider. I'll be considering this particular slab that is mentioned over here. Okay, okay means 1 and 2% max. I can accept. It is permissible. So you can go ahead. You can use the brake. But how long? Again, you have to check, right? So if I'm checking it right now, if I'm getting 2%, less than 2%, later on again you will have to come to my place. Again you will have to check the brake fluid if you are going for a long ride or something, definitely, right? So अब इसमें मुझे ये जो 4 सेगमेंट्स जो है, 4 LEDs जो है, यानी कि 2 सेगमेंट में दो LEDs है, ये मुझे चेक करना है कि मुझे ब्रेक फ्लूइड में वाटर कंटेमिनेशन कितना हुआ है. आई एम गोइंग टू ओपन अप द टूल. देयर आर 2 प्रोब्स, यहाँ पे 2 लीड्स है, दो प्रोब्स है जो मुझे ब्रेक फ्लूइड में यहाँ पे सिर्फ टच करना है. अब ब्रेक फ्लूइड आप जब टच करते हैं तो लेवल कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी का लेवल नीचे ज्यादा हो जाता है और ऊपर भी ज्यादा, ऊपर कम रहता है, तो वो टाइम पे आपको दो सब जगह पे चेक करना है. लेकिन ध्यान रखें ये जो प्रोब्स है, ये प्रोब्स मेटल को टच ना करे. आप अगर ये मेटल को, अभी तो मैंने ऑफ रखा है, तो मैंने अगर ये मेटल को टच करता हूं तो ऑटोमेटिकली इसमें ब्रेक फ्लूइड ना होते हुए भी इट विल गो टू मोर देन 4%, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस हवरिंग इनसाइड. आपको फ्लोट करना है इसको, राइट? मैं आपको बता देता हूं. मैंने शुरुआत चालू किया है, मेरा टूल चालू हो गया ये, और मैंने इसमें डाला है ये, राइट? अब मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने नीचे बॉडी को टच किया और सडनली वो 4 पे गया. इसका मतलब मैं रॉन्ग था. वापस मैं एक बार चेक करूंगा. इसमें मुझे दिखा रहा है कि ये 1% से 1% तक ऑलमोस्ट है, राइट? सो आई कैन स्टिल यूज दिस ब्रेक फ्लूइड. ठीक है, अभी अलग अलग जगह अलग अलग दिखा रहा है, फिर भी हम चेक करेंगे. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% है. यहाँ पे कैविटी है बेसिकली, इसके लिए वो वहां पे अलग अलग जगह पे दिखाएगा. इसके लिए मुझे फ्लोट में जो आपको बोला था कि हर एक जगह पे आपको चेक करना है, तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये 2% तक तो है. अब ये 2% जो है ये परमिसिबल जरूर है, राइट? बट इसका इन ये पर्टिकुलर क्लाइंट ने बीच में ब्रेक फ्लूइड चेंज किया हुआ है, ऐसा मुझे मुझे ऐसा शक है, राइट? इट्स अ गुड थिंग व्हाट ही हैज डन, राइट? सो ब्रेक फ्लूइड अगर आप चेंज नहीं करते थे तो मुझे इसमें 101% मोर देन 4% का वाटर कंटेमिनेशन मिलता था. सो ब्रेक फ्लूइड चेक करने के लिए आपके पास इस तरीके के टूल्स जो है वो रहने बहुत जरूरी है, ताकि आप रैंडम सजेशंस देने से तो अच्छा है आप टेक्निकली सजेशंस अगर दे देंगे तो गाड़ी के लिए भी अच्छा है और कस्टमर के लिए अच्छा है, एंड मोर देन दैट ऑफ कोर्स फॉर योर बिजनेस. सो अभी आपने देखा कि मैंने ब्रेक फ्लूइड कैसा चेक किया हुआ है. So keep watching my channel, subscribe my channel and ring the bell so get all the updates all the time.